So in the previous class, we have seen some construct of JavaScript. Today we will continue with that, and we will see some examples also. So first, let me tell you uh, or remind you that we have already seen how we can incorporate a JavaScript code into your HTML file. So actually, your JavaScript code can be inserted in either in body part or in head part of your HTML script. Okay, we have seen that. Let me repeat again or remind you that you need to write just a script tag. However, I have written type equal to text slash JavaScript, but it is not mandatory. But it is always a good idea to write that, so that browser will be able to recognize that this is a JavaScript code. Okay. So whenever you want to put your JavaScript code in, let's say, head part, you will just insert a script tag in the head part, and within that tag you will specify whatever JavaScript code you want to write there. This is one way. There is another way. You can insert JavaScript code in a separate file. Let's say I have a file message.js. So each JavaScript file will be saved with .js extension. Okay, so you can write your JavaScript code there. Let's say in this file message.js, and you can incorporate this file within the script tag. So what you will write? You will write a script type equal to text slash JavaScript and source. So this is the important part. You can skip it. It is not necessary, but this is important. So you have to specify the URL of your file, where that file is there. So if let's say if your file is in current directory, so you can write the name of the file in this way, simply message.js. But it is somewhere else, you can provide a relative URL if that file is within your project directory. Okay, so this is the way you can specify is JavaScript source code. There is one more way. If your file is not within your application directory, it is somewhere else, and maybe it is residing at some third party server or some remote server, so you can provide full URL there. So your that file will be automatically connected, or maybe maybe attached with that. You can use link tag also. And if you want to specify the code in a inline form, then you can specify in this way. So for example, I have specified I have put a button there in HTML page, and within that property of button I have mentioned that event. Okay, so since JavaScript is used to handle the events that user is generating on a web page, so you need to mention what event you need to handle. So this is called event handler, that is provided by HTML. Okay, so HTML provides an event handler for an event with respect to different elements that you can put on a web page. Okay, so I am using here button element, and the event handler for the button element is on click, and I am providing the source code here. Okay, JavaScript code here. So what this code is doing, when I click on this button, this code executed. And what this code does, this code retrieves an HTML element whose ID is my image, and it appends the source property of that there. So ये जो एलिमेंट है उसके सोर्स जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये इस इमेज का पाथ इंसर्ट कर देता है. So that means this image will be displayed. Okay, there is an image that will be displayed when I will click on that button. Okay, and this image, so obviously when you are displaying an image, you require an image tag. Okay, so this is actually the name of image tag. So I have image tag here, image equal to image ID equal to my image. This is the name of the image tag, and source. So this image has been given a source. So by default, before clicking,
that button, this image will be displayed by your web page. Okay, and width I have mentioned it 200 pixel. Height I have not mentioned, so it will take automatic height. Okay, then I have another image on another button, and the button's title, you can see that turn on the light, turn off the light. So this example I have taken from W3 school. So there is another button that is having event handler on click, and when what I am doing on the click of that event, again the image tag's source property should be changed. That means now this image tag should show different file. Okay, different image file. So let me run that code for you, and then I will come back to this script again, and then I will explain you what is happening there. So the name of file is JavaScript demo. Okay, so here it is, that file. Where is JavaScript demo? Okay, this one. Let me run it. So now you can see that there is some headings and paragraphs and text is there, and this is the image tag where I am showing the image. So this is an image that is showing a valve that is off. Okay, and I have put two buttons there, turn on the light and turn off the light. So what I am going to do, I have written a event handler for both of these buttons. Which event handler I have written? Click on click. That means whenever user will click on this button or in this button, they will take certain actions. So what action they are going to take? So actually in this button, what I am going to do, when a user will click on this button, I am going to change the source of this image tag. So there is an image tag. Image tag is not being displayed here. Image is being displayed. So when I click on that, I will execute a JavaScript, and then will change the source of this image. Okay, so that means now the bulb will this image will become different image. Okay, so let me click on that. So I think now you can see that this is a different image. Somebody who do not understand what is happening, he will say that bulb have become on. It was initially off, now it have gone on, है ना? But you know that I have just what I have done, I have just changed the image that was being displayed here. ठीक है, पहले वाली इमेज से मैंने नई इमेज से रिप्लेस कर दिया, जिससे आपको लग रहा है कि बटन बल्ब ऑन हो गया है. जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई विल रिस्टोर दैट ओरिजिनल इमेज. ओके, so with the help of these buttons, that means on click event of these buttons, you can change the content of any HTML element. Okay, so let me come back to the code again. Now you can see that image was showing initially, your image tag was showing this image. Name of the image is pic underscore bulb off. So this image is actually an image that display a bulb that is in off condition. Okay, so this is the path of the image I have provided. Then I have provided a button here. You can see again the title, the label that is being displayed on this button is turn on the light. So what this button is doing, when you click on this button, this event fires. Okay, so HTML is offering this event handler to JavaScript, and then when this event is happens, JavaScript code is executed, and this code is executed. And what JavaScript is doing in this code, it is referring that an image tag whose ID is image. So it is actually accessing the HTML element whose name is my image, and that is your क्या है वो इमेज टैग. ओके, सो इमेज टैग में जो भी सोर्स प्रॉपर्टी आपने उसे चेंज कर दिया. सो दैट मीन्स मैंने इमेज ही चेंज कर दी. सो नाउ वी आर शोइंग अनदर इमेज. सो दैट्स वाई क्या हो रहा है, ये बल्ब ऑन वाली बट पिक है.
Okay, so that's why your bulb looks like that, it looks like that bulb have become on. Actually मैंने image change कर दिया. Okay, and then अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन ऑन क्लिक इवेंट ऑकर होगी एंड करस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट कॉल होगी, और जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, अगेन फिर से ओरिजिनल जो इमेज है उसको रिस्टोर कर देती है इमेज में. ओके, सो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट्स HTML एलिमेंट्स. Okay. Now let's come to the some other building blocks of function else. Sorry. So as I told you, JavaScript is a programming language. So similar to any other programming language, it also have if else statement. That is very important. Every programming language requires these statements. So you know if statement, how if statement works. Let me tell write the syntax. We will again come back to the loop. मैंने पिछली क्लास में थोड़ा जल्दी में किया था, and we have not seen any example of that. So we will discussing that. So as I told you that JavaScript inspired from C language. So it actually follows a syntax that is also followed by C. So in case of if else structure, let me put the date. Let me write the syntax, then I will come back. If condition, this is called if block. Okay, so similar to other programming language, it offers decision making structures. JavaScript also have decision making structures. So we call these structures as decision making structures. Syntax is, here you will have JavaScript block of code. Okay, so this is your keyword if, then you will write a condition similar to the C, and your condition will have some variables on which we are forming the condition, and these in order to form these conditions you will require relational and logical operators. So you can use relational and logical operators on the variables and on constants, so that you can form a condition like that. Like if you have a variable x, you can write x less than 5. So this is a condition, decision making condition. So you will provide a condition on which the decision need to be taken, and if that condition is true, this code will be executed. So this is how your if block will work. If this condition is true, this code will be executed. If this condition is false, the code will not be executed. So this is the part, this is the structure where you do not have else. But sometimes you will have a situation like that, that if certain condition met, you want to do something, do task 1, let's say. Okay, so here you will write your piece of JavaScript code that will perform the task 1 that you want to perform. Then else, here you will have alternate task. Okay, so in this case what will happen, if this condition is true, then this task will be performed, that means this source code will be executed. If otherwise, if this is false, then by default whatever task you written here will be executed. So let me show you an example. I am having one example with me. Okay, so there is a script I have written there in the body.
ओके, हेड इज नॉट देयर है ना, हेड टैग इस्तेमाल ही नहीं किया। लेट मी राइट हेड समवेयर। maybe let me title decision making in Java script. Okay, so this is your heading. So now you can, if you want, you can transfer this part in the head part also. Okay, so now you can see that I have a script, Java script tag, and within the script tag I have specified things. Now we will talk about a bit about how we can declare variables. We have not discussed that. Okay, so for the time being, you assume that we declare a variable like that. Okay, so age is some variable whose value is being assigned as 10. So age variable is having value 10, and what you are doing here, if age is greater than 18, you write qualifies for driving, else does not qualify for driving. Okay, so now you can see that if this condition is true, then this part will be executed, that means this statement will be executed. Otherwise, if that condition is false, this statement will be executed. Okay, it's very easy है ना. Okay, so let's run it. So at that time I have specified that age is equal to 10. So age variable is assigned a value 10. So obviously you can decide whether this condition will be true or false. So since age that is 10 is greater than 18 is false, so that means this part will be executed. So let me show you JS if else, this one. Okay, does not qualify for driving, it is showing that message. And if I change the condition, I will get different message. So let's say I just mention that age here is 20. So now you will see that you will see different output, qualifies for driving. Okay, so this is how your if else condition works. Very easy है. Similarly जैसा कि मैंने बताया कि many times आपका if else is not sufficient. Sometimes you have a set of conditions on that you need to take different kind of actions. That means normal if else will not suffice for you, so you can use different kind of if else. That means you can use else if ladder. So else if ladder having this kind of syntax. Again it is similar to C. If you will have here condition 1, if your condition number matches, then you can specify action 1 that you need to take. Okay, else if this condition is not satisfied, then you want that if and this condition satisfied, so you have condition 2 here. So in case the condition 2 happens or occurs, you take, let's say, action 2. Else if condition 2 also doesn't satisfy, then let's say you have a condition 3, and if this condition is satisfied, you take, let's say, action 3. So in this way you can have multiple conditions, n number of conditions, let me write. Then you might have else if, let's say, condition k. So here you can take action k. Okay, now none of these conditions are satisfied, then sometimes you might require, हो सकता है आप यहीं पर रुक जाए,
you do not require further. But sometimes none of these conditions satisfied, then you want to specify some default action. Then let's call it a default action. So by default action means if none of the above mentioned condition matches, this condition will be automatically matches. Okay. And in case of else if ladder, you should remember that if this condition is satisfied, only this part will be executed and rest of the part will be skipped. If this condition is not satisfied and this condition is satisfied, then this action will be taken and rest of the part will be skipped, right? And so on. And if none of these condition matches or becomes true, then this part will be executed and control will come out and your else if structure's execution becomes complete. Okay, so this is how you can use else if structure. So this is very useful, and you require many times this kind of structures in your programs. So let me give you one simple example. So suppose that we have a script that is having this following code. Let's say you have a variable named book and book equal to you assign a value. So book is maths. So now I have putting certain conditions here. If book is equal to history, so if this condition is satisfied, then I am going to show this message. If this condition doesn't satisfy, then I check another condition that book is maths, then I will show this message. Otherwise none of these two conditions matches, I will check third condition. So if book is economics, I will display this message, and none of all these three condition matches, then by default this message will be shown to you. Okay, so let's see this code. So since book is math, so obviously you will get this output, math book. Let me refresh again. This is math book, that output you are getting. Now let's assume that I just change it to this one, economics. Now you will see something different, economic book. Okay. Now let's see, I write here computer science. Okay, so now you can see that none of the condition will match. So that means this part will be executed, unknown book. So this is how your else if structure works. Okay, you should always remember that whenever you are writing else if structure, only one block will be executed. Don't need to be confused, and among these only one block will be executed. Rest of the part will be skipped. So this is how you can use else if structure. Okay, now there is one alternative structure, that is switch. So when you use switch, you know, कई लोगों ने आप में से C पहले पढ़ी होगी, you might be knowing how we can use a switch. So switch is actually a structure where suppose that you are having certain options, or you having a variable or decision variable, and this decision variable is going to take some discrete values. So for example, you have a decision variable here, grade. So you know that you will have a fixed set of grades. In your university's case, you have grade like A plus, A B plus, and so on. A plus, A B, O, all that. These kind of grades you are having. So there is a finite set of grades. So on the basis of certain grade, you want to take certain action. Okay. Similarly, not in place of grade, you can have a different kind of variable. That variable actually is being used for taking certain decision, and that variable also have a fixed set of values. That means finite set of values. You can say that is a discrete kind of variable, discrete variable. So that variable is going to take a finite set of values. Okay, let's say 5 or 10 or 6 something, and then on the basis of different values of that variable, you want to take different actions. So you can use for this kind of scenario a switch structure. Okay, so again it is a decision making structure. So in case of switch, how you work, you need to use keyword switch, then within the bracket you need to provide your decision variable. Okay,
whose on the basis of whose values you are going to take different actions. So you have now on the basis what kind of values this variable is going to take, and for which values you want to take certain actions, you need to specify that. So now let's say you say that if grade is A, so you write case A. So case A means if suppose grade is A, or this variable takes value A, then you want to take certain actions. So let's say you want just show a message, good job, okay, or you can just display grade A, okay. Then let's say if grade variable having value B, so you will write B like that. Then let's say you will show this message. Now important, you notice here break keyword. It is very important to use break keyword, otherwise what will happen, if you do not use break keyword here, then subsequent cases will be executed until a break is encountered. So suppose that nowhere you uses break keyword, then all the part will be executed. Okay, I will show you that. Okay, so let me complete this and then I will show you if what will happen if I remove the break. Case B, so if your variable takes the value B, then you will show this message. If variable takes the value C, you will show this message. If variable sees the value D, you will see this message. If variable takes the value F, you will show this message. Now sometimes you may also want to have some default action कि इनमें से कोई वैल्यू ना हो तो default action this should be taken, है ना. So now you will use this well. Now it is important to remember that in case of default you do not need to use break, because इसके बाद कुछ है भी नहीं है, so you do not require to use break. आप break use भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Okay, so let me show you this example. So that I have put the grade A, so you are expected that this message will be, or this part will be executed. That means good job, this message you will see. Okay, so let me show you switch this one. You can see good job. This is the message. This is the part just I am just giving a message that you are entering the switch block. आपने switch block में enter किया, ये code execute किया, and then you have come out from the switch block. Now let's see if we change the value of this variable. Let's say we make it C. So now what will happen? First it will test this case or this, then this case, and then ultimately this case will be met and you will see this output, and rest of the part will be skipped. Passed. Okay. This was the message that have been shown. Now let's assume that I remove this code. So in case of JavaScript you can use this symbol for comment, or in case of C you can also use C style kind of comment like that. Okay, I have not told you about the comment, how you can comment a code, so let me use this opportunity. Okay, so now let's suppose that I make it A and I'm just going to remove this, and let's see what happens. Okay, so now you might have observed that you are going to get two messages, good job and pretty good. Excuse me. Okay, so this is happening because I have removed this break. So it is very important to use break properly. If you forgot to remove the break, then you might end up with different kind of output. Wrong output आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक यहाँ था इसलिए ये दोनों मैसेज आए. अगर मैं यहाँ से सारे ब्रेक्स हटा दूंगा, then what will happen, all message will be displayed except this one. Okay, so आपको स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का ध्यान रखना है. अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे then you might display a wrong kind of output. Okay, now
Now let's talk about the for loop, the looping structures. That is another important part of any programming language. Let me close this one, close this one also, this one also. So as I told you that JavaScript have different loops. So first loop is for loop. You might remembering your for loop, how this works. I have already discussed the syntax. So for loop having three parts. First you need to initialize the counter, then this is your condition that is need to be tested for so this is the condition for exit actually. Okay, so you know that I do not require to tell you that for loop is used to execute a code repeatedly until a certain condition is met. Okay, so in case of for loop you require three things. You need to initialize a counter. So this counter will help you to decide from what point you need to start. Then this condition will help you to how many times this code should be executed, and this will help you to increment your counter. So on the basis of these settings you will be able to execute this piece of code some number of times. Okay, so in this case, in this example, I am having a variable that is defined as like count. So in JavaScript, let me tell you how to define a variable. So in case of JavaScript, actually you just need to use var keyword to define any kind of variable. And it is important to remember that in case of JavaScript you do not need to provide the data type of a variable when you are declaring it. Okay, obviously declaration is necessary. You cannot use a variable name without any declaration. So in this point JavaScript differs from C. In case of C programming language, you might have remembered that C requires the data type at the time of declaration of the variable. You need to tell the compiler that what kind of variable, what kind of value this variable is going to take. But in case of JavaScript, it is not strictly typecast, so you do not need to require the variable declaration in that you do in C. So you just need to declare the name of the variable. Data type it will automatically understand. So whenever you will assign a value to this variable, it will take automatically that value. So for example, in that phase, that point of time, you just assign the count a value which is integer. So your count variable will become automatically an integer variable. Okay, so this is one way to declare a variable. Now you can also declare your variable while initializing. So this is another kind of way कि आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और वहीं पर वैल्यू भी असाइन कर दी. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल. सो यू हैव टू चॉइसेस. आइदर यू डिक्लेयर ए वेरिएबल लाइक दैट एंड देन लेटर व्हेन यू रिक्वायर यू कैन इनिशियलाइज इट. ध्यान रखना है लेकिन बिना इनिशियलाइज किए आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते. सो दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में आप वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू एंड डेटा टाइप ऑल्सो. सो जब आप वेरिएबल को असाइन कर देंगे उसी के बाद आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे. सो जनरली इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया और इट इज़ ए बेटर वे टू डू दैट कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करें तभी आप असाइन कर दें उसे वैल्यू. तो आपने जिस पर्पज़ के लिए वेरिएबल बनाया है उसी टाइप की वैल्यू आप उसे असाइन कर दें. सो अगर आपने लेट से फ्लोट वेरिएबल बनाया तो आप उसे फ्लोट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू असाइन कर दें. ठीक है, अगर आपने बूलियन वेरिएबल बनाया है तो बूलियन वैल्यू असाइन कर दें. अगर आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया है इंटीजर वैल्यू असाइन कर दें. अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्जेक्ट टाइप से उसे इनिशियलाइज कर दें. अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आप लेट से स्ट्रिंग रखना चाहते हैं तो आप उसे स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दें. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डील विद द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट. बाकी के वेरिएबल नेम्स की जो कन्वेंशन है वो सी में जैसी कन्वेंशन है, एग्जैक्टली वही कन्वेंशन है. ठीक है, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट. अगर आपको नहीं याद है सी की कन्वेंशन, यू कैन go to the internet or you can refer any book of C. ठीक है, book written on C. Okay, so now let me come back to the for loop. So in case of for loop, I have three parts. So you might be remember for loop is an entry control loop. Sorry, exit control loop. No, sorry, entry control loop. So initially first count will be initialized and then
before going to execute this code, the condition will be tested. So if your condition is true, the code will be executed. Agar condition false hai, code will not be executed. Okay, so suppose that in that case you will see that condition is true because count की value 0 है और आपने condition लगा रखी है count is less than 10. So count की value 0 है, so this code will be executed. Again जब ये code execute हो जाता है, then count ये value execute होती है. That means this statement will be executed. That will increase the variables value by 1. Okay, and then count की value 1 हो जाएगी. Still condition is true, so this will be executed. So you can see that count की value 0 से 9 तक, that means total 10 times this part will be executed, and it will show you the value of count variable. Okay, so let me show you the this part of script. So let's run it. So you can see that count की value 0, 1 to up to 9 and loop stopped. So this is your for loop. Then you have another kind of loop that is called while loop. So while loop की syntax थोड़ी सी different है. पहले आपको variable को initialize करना पड़ता है. Then in case of with the while keyword, you will provide a condition within the parenthesis. So this condition will decide whether this code will be executed or not. And one thing you should remember, here you will have the body part of the loop, and in the last or somewhere in the body you need to update this counter also. अगर आप ये counter increment नहीं करेंगे, then you may turn your loop in a infinite loop. So you should remember that this part is very necessary. ठीक है, अगर आप इसे भूल गए, then your code will go into an infinite kind of loop and your program will not stop. Okay, so you can see that the output of this code the same for loop की तरह. So actually both of these loops are equivalent actually. दोनों को आप आपकी अपनी एप्लीकेशन में चाहें तो आप फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर फॉर लूप बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट. आप सारी चीज़ें यहाँ एक साथ लिख देते हैं. तो ये जो भूलने वाली स्थिति है ना, ये नहीं रहती है. कभी आप काउंटर इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं, कभी आप अपडेट करना भूल जाते हैं काउंटर को. सो दैट्स वाई मैनी पीपल प्रेफर फॉर लूप. हालांकि दोनों लूप एग्जैक्टली सेम तरीके से फंक्शन करते हैं, इंटरनली दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है. Then there is another kind of loop that is called while loop, do while loop, and this loop is exit control loop. So exit control loop means first body will be executed and next time body execute होना है नहीं होना है, that will be decided in the conditions that is given here. So again you can see that in the third script I have used a loop that so I have initialized a counter variable. Then this is the body. Within the body you need to update the counter. It is very important. अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो सेम while loop की तरह ये loop भी फिर मे बी स्टॉप ना हो. And the last you will put the condition. So here this loop will execute until this condition is true. जैसे ये condition false होगी loop will stop. Okay, so let's see what was the output. You can see 0 से 4 तक up to 5 टाइम ये loop execute होगा. Okay, so this was your do while loop. There is one more loop kind of loop that is similar to for each loop that you used to have in other programming language like PHP. So this loop is actually used for looping through the properties of an object. So since your JavaScript also supports object orient programming in some way, so you also need to let's say navigate or need to loop through the properties of an object that you are having. Okay, so for that you have this kind of loop, for in loop. We call it for in loop. Okay, for in dot dot dot. So this loop having this structure, so you need to have a variable. Okay, so let's say we have a variable a property, then for a property in navigator. So this is an object that you need to provide. So navigator is actually an object of a browser. ठीक है, ब्राउजर का एक नेविगेटर ऑब्जेक्ट है, तो हम उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं. सो यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट. अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो यू विल पुट दिस ऑब्जेक्ट हियर, एंड इन दिस लूप व्हाट विल हैपन, ईच इटरेशन में ये ऑब्जेक्ट की एक एक वैल्यू करके इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे, एंड नाउ यू कैन मैनिपुलेट दिस वेरिएबल.
So we are just doing simply what we are doing, we are just simply printing this value. ठीक है. सो नेविगेटर ऑब्जेक्ट में जब ये लूप एक एक करके रन होगा तो फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो नेविगेटर की जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल एंड वी हैव डिस्प्लेड दैट वैल्यू. ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ भी डिस्प्ले करना है, यू कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ओके. सो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट योर वेब डॉक्यूमेंट एंड राइट एज ए फंक्शन, जिसकी मदद से आप कुछ भी मैसेज या यू कैन ऑल्सो सम डिस्प्ले सम वेरिएबल वैल्यू ऑल्सो. ठीक है. सो नेविगेटर जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक एक करके प्रॉपर्टीज वेरिएबल को असाइन होंगी इन ईच इटरेशन. पहले इटरेशन में पहली वैल्यू जाएगी, दूसरे इटरेशन में दूसरी वैल्यू जाएगी और ये लूप उनको डिस्प्ले करता जा रहा है. तो यू कैन सी दैट द आउटपुट देयर दिस. सो नेविगेटर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से आप देखेंगे वेंडर सब, प्रोडक्ट सब, वेंडर, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेविगेटर ऑब्जेक्ट. ये फॉर दिस टाइम जितनी प्रॉपर्टीज थी, ऑल प्रॉपर्टीज हैव बीन डिस्प्लेड. सो इफ योर ऑब्जेक्ट इज हैविंग एनी प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेड इन दिस वे. सो फॉरेन लूप इज यूज्ड एक्चुअली फॉर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स. तो आपको ऑब्जेक्ट से अगर डील करना है, यू कैन यूज फॉरेन लूप. देयर आर सम मोर लूप्स और देयर, वी विल नॉट डिस्कस दोज लूप्स. ओके. So this is your for loop. So now let me quickly come back to the another part, that is JavaScript function. So as in C you have functions, so in case of JavaScript you also define the functions, and the example, the advantages of the functions are same that you have already studied. C में आपने पढ़ा होगा या और you have studied in other kind of programming language. Every language have functions, idea of functions. So JavaScript also have functions. So in case of JavaScript, how you will define a function? So function is having this kind of syntax. You will use function keyword, then name of the function. Within the parenthesis, you will specify the arguments if that your function is requiring certain arguments. Okay. So you can have different kind of functions. For example, a function that is without any argument. So I have given a function here. आपको याद रखना है ये this should be written in a script tag. Okay. So name of the function is say hello. It doesn't require any argument. So this is the block, or you can say that this is the body of function. So this function is just displaying a message, hello there. Okay. Then I have defined another function. Now this function is a function that requires arguments. Okay. So this is argument. You are providing one argument name, second argument is age, and then you are displaying some message on the basis of these arguments. So for example, document write name age, ये आपकी string है, आपने string के साथ age को concatenate कर दिया. So this plus is actually string concatenation operator. So we are just concatenating strings there in this message. Okay. So ये जो दोनों arguments हैं इनको ये concatenate कर रहा है, इनके बीच में name और के बीच में age ऐड कर दिया, then age ऐड किया, then age के बाद years old एक string ऐड कर दिया. So this is the function that is defined with some parameters. Okay. Then function can also return value. So to return a value from the function, inside the function you will require return keyword. Okay. So you just reach to write return and variable name similar to the C. Sorry. Okay. So this is the function that takes arguments and returns some value. Okay. What this function is doing? This function is actually taking two arguments, first and last. This is a temporary variable that you have defined. Then we have a variable full, first, बीच में एक आपने स्पेस ऐड कर दिया. सो फर्स्ट जो भी आर्गूमेंट है स्ट्रिंग आर्गूमेंट, इसमें आपने एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया दैट इज सिंगल स्पेस, एंड देन आपने लास्ट वेरिएबल जो है इसमें जो कुछ है वो आपने अपेंड कर दिया है. सो ये तीनों चीज़ें ऐड होकर के अपेंड कॉन्केटनेट होकर के इस वेरिएबल में आ जाएंगे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न दिस वैल्यू. सो इसमें जो इनपुट मिल रहा है ये दोनों को कंबाइन करके आपको रिटर्न करके देगा. सो दिस इज अ फंक्शन, अनदर फंक्शन जिसमें आपने दो आर्गूमेंट्स पास किए हैं डायरेक्टली. ठीक है. अब आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया. यू कैन सी दैट कॉन्केटनेट ने आपने फंक्शन डिफाइन किया. सो दिस फंक्शन इज एक्चुअली calling the function concatenate, then providing two input to this function first. So first वेरिएबल में समीर का नाम चला जाएगा एंड लास्ट में कुमार चला जाएगा, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे रहा है.
ठीक है। नाउ ये जो आपको मालूम है ये फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आप जो फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है, जैसे सी में आप रिसीव करते थे वैसे ही आप इस वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं। नाउ वन मोर थिंग यू शुड let me remind you regarding the variables. So variables having two different kind of scope in JavaScript, global scope and local scope. So a function that is defined within a block or within a function, sorry, variable defined within a function or in a block will have local scope. ओके एंड अगर बाहर जा अगर फंक्शन डिफाइन है, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दूँ एक तरीके से, लेट्स से वेयर फुल, कोई इशू नहीं है, ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, ध्यान रखना। दिस वेरिएबल इज ग्लोबल एंड दिस वेरिएबल इज लोकल। तो ये जो वेरिएबल है लोकल फुल, आप इसे जब एक्सेस करेंगे तो इसकी यही वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होगी। दैट मीन्स लोकल वेरिएबल विल ओवरराइड द ग्लोबल वेरिएबल। सो इस फंक्शन में जो कुछ भी वैल्यू होगी इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड कराई है आपने, दैट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड। ओके, सो एक्चुअली इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल टेक्स द रेफरेंस, प्रेफरेंस मिलती है लोकल वेरिएबल को, क्योंकि जब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ये करते हैं प्रिंट फुल या रिटर्न फुल, तो ये फुल इस वेरिएबल की वैल्यू रेफर होगी, ना कि इस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप इस किसी स्कोप में एक्सेस करते हैं तो लोकल वेरिएबल को रेफरेंस मिलती है। और ध्यान रखना है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है, इस ब्लॉक के बाहर आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया है, यू कैन नॉट एक्सेस रिजल्ट वेरिएबल हियर लाइक दैट। अगर आप यहाँ डिस्प्ले रिजल्ट वेरिएबल को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे या उसके पास कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट एन एरर। ओके, क्योंकि द रिजल्ट वेरिएबल इज हैविंग स्कोप लोकल, हाउएवर दिस वेरिएबल इज हैविंग स्कोप फुल। सो आप इस वेरिएबल को स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। Okay, so these are the story of scope of the variables. So let's see this code. पहले कोड देख लेते हैं, then I will tell you कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, what the things happening, how things happening. Where is function? Yes, this one. Okay, so say hello there. ठीक है, so let's come back to this code. What happened here? So you can see that I have provided a button here within the form. So button is having on click event handler. So मैंने इस बटन का on click event handler जो है उसके बिहाफ पर मैंने क्या कॉल किया है कि जब इस बटन पर क्लिक हो, this function should be called say hello. So whenever I click on this button, this function executes. और ये फंक्शन का कोड क्या है, this one. So it just display the message hello there. नाउ यू माइट हैव रिमेंबर, मैंने एक बार बताया था कि जब आप डॉक्यूमेंट और राइट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा HTML पेज क्लियर हो जाता है और केवल जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दिखाई देता है। यू माइट सी दिस इफेक्ट। लेट मी अगेन रिपीट एंड शो यू द इम्पैक्ट GS फंक्शन। ओके, नाउ लेट मी रिमाइंड यू, आप देख रहे हैं कि दिस इज ए वेब पेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, क्लिक करने के बाद जावास्क्रिप्ट विल डिस्प्ले समथिंग। तो जब जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले करेगी तो HTML पार्ट का पेज का जो कुछ भी डिस्प्ले था वो सब क्लियर हो जाता है। यू कैन सी हियर, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, केवल जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है। ओके, तो अगर आपको पेज क्लियर नहीं करना है तो हमेशा आप क्या करेंगे, अलर्ट यूज करेंगे इसकी जगह पर। तो अलर्ट में क्या होगा, आपका पेज का आउटपुट क्लियर नहीं होगा। Let me come back to again. So now you can see there, now I have put another button within another form in the page. So this button is calling say hello and it is passing two parameters, Samir and 7. Okay, so now you can let's go to this code, say hello p. So that means this part code will be executed and what this code is doing, it is just displaying name. So name में आपको मालूम है समीर है, so समीर then space जहाँ पर मैंने दिया हुआ है समीर एज प्लस एज आ जाएगी, एज 7 है, समीर एज 7 ईयर ओल्ड। सो यू विल सी दिस मैसेज जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं, बिकॉज मैंने ऑन क्लिक में इवेंट हैंडलर में ये कोड कॉल रख रखा है। ठीक है, टाइटल है ये बटन का, बटन पर जो लेबल डिस्प्ले होने वाला है। सो लेट्स सी से हेलो पी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आई विल गेट दिस मैसेज समीर इज 7 ईयर ओल्ड। ठीक है,
सिमिलरली नाउ लेट्स कम टू द थर्ड बटन। तो जो थर्ड बटन है इसमें मैंने सेकंड फंक्शन नाम से जो फंक्शन इसे कॉल किया हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड फंक्शन क्या कर रहा है, दिस फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन concatenate, और यहीं हमने एक्सप्लिसिटली वैल्यू प्रोवाइड कर दी है समीर एंड कुमार। सो ये जो फंक्शन है, सेकंड फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ पहले आपका रिजल्ट नाम से, देन concatenate फंक्शन कॉल किया इसने, तो कंट्रोल जंप करके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, समीर की वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी, कुमार की वैल्यू लास्ट वेरिएबल में चली जाएगी, एंड दोनों जो ना कॉन्कैटनेट हुए यहाँ पर समीर, देन मैंने एक स्पेस ऐड किया सो दैट दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस आ जाए। तो ये स्पेस ऐड करने के लिए किया, देन लास्ट इन दोनों को ऐड करके कॉन्कैटनेट करके फुल वेरिएबल में असाइन कर दिया, एंड देन इस फंक्शन ने क्या कर दिया है, फुल इज रिटर्न, दिस वेरिएबल वैल्यू इज रिटर्न। सो आप देखेंगे दिस वेरिएबल कंटेन्स समीर स्पेस कुमार, so Samir space Kumar will come back here in the result variable, and now you are displaying this. So let me change this to alert. Let's see क्या होता है अब। Let me refresh. Sorry, something. Document dot display alert is not working. Second function, oh sorry, let me remove this variable first, शायद ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। Let me alert. हाँ क्या अलर्ट, भाई डॉक्यूमेंट तो डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं अलर्ट, अच्छा चलिए देख लेते हैं। आई हैव स्टडीड समवेयर कि जो ना डॉक्यूमेंट जो ना नेसेसरी नहीं होता है डॉक्यूमेंट लिखना, विंडोज डॉट अलर्ट है, सॉरी मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा था, ठीक है अलर्ट, ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट, चलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ विंडोज आता है ना, विंडोज डॉट अलर्ट होता है ना, विंडोज होता है, सॉरी मैं भूल गया था, विंडोज डॉट अलर्ट होता है, तो जिसमें विंडोज ऑप्शनल होता है, ठीक। तो ये है एक्चुअली, लेकिन आप इसमें विंडोज को ड्रॉप कर सकते हो, यू अब क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, विंडोज डॉट अलर्ट, विंडो है या विंडोज है, नहीं करेगा, विंडोज के साथ भी काम करेगा, विंडोज लिख दिया था मैंने, विंडो है, हाँ विंडो होता है ना, एस लिखा था, वही मैं अलर्ट, ये विंडोज ऑप्शनल होता है एक्चुअली, अलर्ट ऐसे ही काम कर रही है, ये विंडोज डॉट अलर्ट होता है करेक्ट, लेकिन चूँकि विंडोज बाय डिफ़ॉल्ट डॉम मॉडल में अवेलेबल है, पूरा वेब पेज विंडोज़ के फॉर्म में है, तो वो डॉम में विंडोज एक्चुअली ऑप्शनल होता है, सो दैट्स वाई अलर्ट अकेला काम करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वापस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे इसमें जब हम अलर्ट करते हैं तो पेज क्लियर नहीं होता है आपका, है बिकॉज इट विल नॉट क्लियर द पेज, लेकिन आप डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तब आपका पेज पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये आपको देख लेना है कि आपको मैसेज यूज़र को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके ठीक है, अब पेज क्लियर हो गया।
ओके, सो आप देख सकते हैं पिछला जो पेज में जो कुछ कंटेंट थे ऑल हैव बीन क्लियर। तो ये आपको देख लेना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको अलर्ट इस्तेमाल करना है या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस्तेमाल करना है। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम पार्ट ऑफ सम, थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में और कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी इवेंट्स के बारे में और, एंड देन हम जावास्क्रिप्ट को स्किप कर देंगे एंड देन वी विल कम टू द PHP। ठीक है, क्योंकि वी डू नॉट हैव टू मच टाइम टू डिस्कस ऑल दीज स्टफ्स।